Hello friends, welcome back to our YouTube channel. So in this video, I will talk about one of the very important issue related to on-campus placement. So I will talk about the harsh reality of on-campus placement, and you should understand the ground reality, and you have to prepare smartly. Especially I am talking to 2026 pass out as well as 2027 या और जो freshers हैं उनके लिए भाई बहुत important video होने वाला है. So let me talk about some important point that you should know. First of all, friend, that is the ground reality that on-campus placement is an opportunity, not a guarantee. That is important things जो कि बहुत सारे candidates को ध्यान में नहीं रहता है. This is especially for those candidates in which or on that college where a large number of students are getting enrolled and many companies are visiting and they are thinking that yeah, मेरे कॉलेज में बहुत सारा कंपनी आ रहा है एंड आई विल नॉट स्टडी एंड आई विल easily get the placement. So that is not the important things. Yeah, it is good that more companies visiting your college, so that's a good thing, but you have to practice and you have to work hard to crack a job. That is important things because competition is intense in that particular company. Okay, so expectation versus reality can be very different. That is important things. Okay, so especially I'm telling to first and second year, if you are moving to the college, then you have to understand the reality and you have to work hard. Okay, क्योंकि आपको पता है जब से AI आया देन मार्केट लिटिल बिट डिस्टर्ब हो रहा है. ओके, एंड देयर इज huge number of uncertainty, especially to computer science students. Next important things that CGPA play a very important role in shortlisting, and that is the important things. आपको CGPA basic at least 8+ maintain रखें, then it is good things for both on campus as well as off campus because CGPA play a important role. And अगर CGPA आपका अच्छा रहेगा तो स्टार्टिंग में यहाँ फिल्टर हो जाएंगे. सो दैट इज़ इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड ट्राई टू कीप द नो बैकलॉग. स्पेशली आई एम टेलिंग टू फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स, जैसे ही आप थर्ड ईयर तक है दैट इज़ गुड, बट फोर्थ ईयर तक भैया आप कोशिश करें देयर शुड बी नॉट एनी बैकलॉग एंड यू शुड नॉट हैव लो परसेंटेज, अदरवाइज इट विल लीड टू डायरेक्ट रिजेक्शन. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, देयर इज इन मोस्ट कॉलेज क्या होता है, मास रिक्रूटमेंट. मास रिक्रूटर जो है डोमिनेट करता है. सो मेनी ऑफ द फ्रेशर स्पेशली आई एम, आपने एक मीम भी देखा होगा स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर में सोचते हैं भाई आई विल क्रैक द गूगल IBM और दिस वन, एंड जैसे जैसे फेजेस होता है देन दे स्टिक टू द TCS और कॉग्निजेंट फॉर द लो पैकेज 3.6 निंजा और डिजिटल. सो दैट इज़ द इंपॉर्टेंट थिंग. यू हैव टू अंडरस्टैंड द ग्राउंड रियलिटी एंड यू हैव टू वर्क हार्ड. ओके, दैट इज़ इंपॉर्टेंट थिंग्स. एंड रोल में भी जेनरिक और सपोर्ट बेस्ड, दैट इज़ इंपॉर्टेंट क्योंकि मैं अभी बहुत सारा कॉलेज का फीडबैक ले रहा हूँ एंड स्टूडेंट से. इन मोस्ट ऑफ द कॉलेज नाउ IT कंपनी बहुत कम ही आ रही है एंड सपोर्ट बेस्ड या अदर कंपनी आ रहा है. सो यू हैव टू बेसिकली मीन्स work on skill. That is important things because without skill they not gonna hire you. Okay, and there is a huge competition in on campus. So again saying on campus placement में अगर आपको अगर मौका मिल रहा है then take it seriously and try to crack job in on campus because off campus is very hard. Friends, you know very well that is resume shortlisting, CGPA, your college, and lots of things matter. So try to get a placement on campus. If company is visiting, take it seriously. And this is also one of the reality of on campus that in many college, especially I am talking to Kolkata based college, very few company are visiting. And खासकर पिछले 1-2 साल से 2024 2025 में मैं बहुत सारे कॉलेज का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट इन मोस्ट ऑफ द कॉलेज नंबर ऑफ कंपनी हैज़ बीन रिड्यूस्ड एंड फ्यू स्टूडेंट्स आर गेटिंग हायर्ड. Okay, so that is important things and you should note and you should keep applying for the off campus too. I also post a lots of job update, या कहीं से भी आप ऑफ कैंपस अप्लाई करते रहें because don't completely depend on your college that they will basically means they will bring a company or lots of company. Don't depend completely on them and don't believe them. Okay, I can share you one case of a particular college what actually happened until 7 same and no company was visiting on that college. So students go to the principal and ask about the reality that why not coming, and he keep basically extending it that wait for till March or wait till April. And फिर क्या हुआ भाई 8 सेम एंड हो गया एंड no company visited in that particular college. So that is the important things. You should work hard and you should keep applying off campus. Okay, don't depend on college. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्किल गैप सॉक. दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग्स. कॉलेज सिलेबस आपको पता है इट इज़ नॉट इंडस्ट्री ओरिएंटेड. सो यू हैव टू डेवलप सम एक्स्ट्रा स्किल्स स्पेशली इन AI डेटा साइंस या जिसमें रहे कुछ स्किल्स आप बनाइए आइदर थ्रो यूट्यूब थ्रो अदर वेबसाइट्स. यू शुड वर्क ऑन स्किल स्पेशली DSA DBMS जावा. दीज आर द थिंग्स आपको करना है. कोई एक टेक्स्ट ऐप को आप रख सकते हैं.
So if you want dedicated video on that, you can comment. I will try to make that, but you have to go through it. Next important, peer pressures and mental state. Don't make comparison with other candidates. You might say that वो students नहीं पढ़ रहा था and he got placement of 9 LPA or 7 LPA, but I did not get. That might happen, but be positive and work hard. Okay, multiple rejection might be there, so that should not impact your confidence. Okay, so be careful and एक कंपनी में नहीं हुआ दूसरा में ट्राई कीजिए, but be positive. Okay, at the end you should basically मीन्स मेन टारगेट शुड क्रैक वन जॉब. दैट इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉलेज में एक्चुअली एक जॉब जैसे आपका मीन्स लग जाएगा, देन यू विल नॉट अलाउ टू सीट फॉर फर्दर कैंपस हायरिंग. सो दैट इज़ इंपॉर्टेंट थिंग्स. नाउ व्हाट actually company want, they want strong fundamentals, especially DSA. I am talking about the computer science, DSA, AI related things, cloud computing, another good project. You should be there. You should have clear communication skill. You should have, and that is not mandatory, but you should, अगर आपने कोई internship किया, that will give you an edge. Okay, and problem solving mindset, that is important things. Now bigger truth is, placement is starting point, not the final destination. Okay, and off campus opportunity are equally important, which I am telling you a lot. You should keep applying for off campus. Okay, and career growth depend on continuous learning. So ऐसा नहीं कि आपको एक बार जॉब मिल गया then you will become calm sit. No, it basically depend on continuous learning. So what is the conclusion I want to tell, that build skill beyond syllabus. You should not stick to the syllabus कि syllabus में जो है या कॉलेज जो पढ़ा रहा है उतना ही मैं पढ़ूंगा. You should think beyond that. Practice aptitude and interview skills, work on real world projects, and stay consistent and mentally strong. That is important things I want to tell. So this is one of the important things मुझे लगा कि आप लोग को बताऊं. If you want this kind of video, must comment here and support and subscribe us for getting such important video. कोई भी डाउट है feel free to ask here, comment here. I feel very happy to help you. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.